Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual funds and matters related with them. The numbers to call us on are 23314444. Primarily, this is the number 23314444. Do not forget to prefix 011 if you're calling us from outside Delhi. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, हर्ष रंजन। नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताजा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेंगे, साथ ही नजर डालेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों के चढ़ते उतरते ग्राफ पर। दिन रविवार का और आज के दिन खास तौर पर हम अपने श्रोताओं को आमंत्रित करते हैं कि आप चाहें तो म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। क्या रखना है, क्या खरीदना है, क्या बेचना है म्यूचुअल फंड में, आप जरूर पूछें हमसे। हमारे एक्सपर्ट जाने माने म्यूचुअल फंड के धीरेन्द्र कुमार उपस्थित होंगे फोन लाइन पर और हम धीरेन्द्र का स्वागत भी करते हैं। वो जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, आप आ गए? जी, धन्यवाद। वार्म वेलकम धीरेन्द्र। थैंक यू। और शुरू करते हैं आज का मार्केट मंत्र। सबसे पहले हेडलाइंस इंग्लिश में। Prime Minister Narendra Modi dedicates to the nation Bengaluru-Mysuru Expressway in Karnataka. And foreign investors pump in more than 6,300 crore rupees in the Indian capital markets this month so far. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे देश को समर्पित किया। विदेशी निवेशकों ने इस महीने अब तक भारतीय पूंजी बाजारों में 6,300 करोड़ रुपए से अधिक निवेश किए। Market Mantra. Market Mantra. Market. Prime Minister Narendra Modi has said that infrastructure development taken up extensively in India not only brings comfort in travel but also generates employment. He said it brings in investment and find ways to generate revenue for the local population. The Prime Minister was speaking after inaugurating the Bengaluru-Mysuru 10-lane expressway, which reduces travel time by more than half. He said that the expressway connects the tech city of Bengaluru with the traditional city of Mysuru. He noted that this will help the growth of tourist destinations in Ramanagara and Mandya too. The 4 lanes of Kushalnagar will connect tourist places, Kodagu, and provide road connectivity to Mangaluru in the coming days. और हम बात करेंगे विदेशी निवेशकों ने इस महीने क्या इन्वेस्ट किया है, लेकिन उसके पहले एक बार फिर बता दें कि आज हमारे पास एक टेलीफोन लाइन उपलब्ध है। आप श्रोता चाहें तो उस टेलीफोन लाइन पर फोन करके म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई सवाल पूछ सकते हैं और नंबर है 23314444, दिल्ली का नंबर। इससे पहले 011 यहां का एसटीडी कोड डायल करें। नंबर एक बार फिर 23314444। और विदेशी निवेशकों ने मार्च महीने में अब तक भारतीय पूंजी बाजारों में कुल निवेश 6,300 करोड़ रुपए से अधिक का किया है। विदेशी निवेशकों ने इक्विटी बाजार में 13,540 करोड़ रुपए निवेश किए, जबकि हाइब्रिड बाजारों में कुल निवेश 1,185 करोड़ रुपए का रहा। निवेशकों ने दूसरी तरफ ऋण बाजार से 2,987 करोड़ रुपए निकाले, जबकि ऋण बाजार के ही वीआरआर के जरिए 5,380 करोड़ रुपए निकाले। इस तरह इस महीने अब तक कुल विदेशी निवेश 6,357 करोड़ रुपए का रहा है। इससे पहले एफपीआईज ने फरवरी में 4,139 करोड़ रुपए और जनवरी में 26,544 करोड़ रुपए भारतीय पूंजी बाजारों से निकाले थे। और अब बारी है धीरेन्द्र की, क्योंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर विद्युत कोलकाता से। जी विद्युत, आप अपने सवाल को पूछ लें। हाँ, मेरा सवाल यह है कि देखिए, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन मैंने सुना हूं कि ईटीएफ इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस रेशियो ये कम है।
तो फिर भी हम लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए, म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए, लेकिन ईटीएफ के बारे में कोई नहीं बोलता है। आप थोड़ा ईटीएफ के बारे में थोड़ा बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। जी जी हाँ, ईटीएफ का खर्चा कम होता है, पर सबसे पहले मैं बता दूं कि ये ईटीएफ एक म्यूचुअल, इसको खरीदने का तरीका बिल्कुल अलग है। मैं इसके पहले ईटीएफ को विस्तार से बताने के पहले मैं बताना चाहूंगा कि कितने तरीके के फंड होते हैं अपने डिजाइन से। एक तो म्यूचुअल फंड जिसमें कि आप पैसा देते हैं और फंड मैनेजर निर्धारित करता है किसको क्या खरीदना है, क्या बेचना है। दूसरी तरफ आप पैसिव फंड खरीदते हैं, इंडेक्स फंड खरीदते हैं, और हम जब ईटीएफ की बात करते हैं तो वो हमेशा किसी न किसी इंडेक्स पे आधारित होता है। ईटीएफ एक्टिवली मैनेज फंड नहीं है जहां पे फंड मैनेजर निर्धारित करे। दूसरा, आप जिस तरह से खरीदते हैं, जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आप 3 बजे के पहले आप 10,000 रुपए देते हैं और उस दिन के एनएवी पे आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट अलॉट हो जाते हैं। जब आपको ईटीएफ खरीदना होता है तो आप इसको शेयर की तरह खरीदते हैं, शेयर की तरह खरीदते हैं, और जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो वो एनएवी पे मिलता है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो एनएवी पे मिले। आपको अगर उस समय ज्यादा लोग खरीदने वाले हैं और कम लोग बेचने वाले हैं तो उसका दाम थोड़ा एनएवी से ज्यादा होगा, विपरीत भी हो सकता है। तो ये, और उसके अलावा इसको जब आपको बेचना होगा तो उस समय बाजार में इसका दाम क्या है, इस पे आपका रियलाइजेशन डिपेंड करेगा। तो इस वजह से जिस तरह से म्यूचुअल फंड खरीदा बेचा जाता है और जिस तरह से ईटीएफ खरीदा बेचा जाता है वो बिल्कुल ही अलग है। Joining us now is Yogesh from Delhi. Yogesh, a warm welcome. नमस्कार सर। मेरा धीरेन्द्र से सवाल ये है कि सर मैं काफी लंबे समय से म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा हूँ और उसके अलावा मैंने डायरेक्ट स्टॉक भी पिक करने स्टार्ट करे हैं कुछ अपने लिए। मैंने 5 स्टॉक इसमें चुने थे अपने लिए, जिनका मैं नाम शायद यहाँ पे नहीं ले सकते। सर उसमें मेरा सवाल ये था कि हमने जो उनका बाय प्राइस था, हुआ ये कि जब हमने उनको परचेज करा उसके तुरंत बाद उन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिखाया 12% का। तो कई लोगों ने हमें सलाह दी इनको आप बेच दो फिर दोबारा खरीद लेना जब भी गिर जाए, पर हमने लंबे समय के लिए निवेश किया था, पर वो हुआ ये कि वो वाकई में उसके बाद वो दोबारा गिर गए और वो मेरे बाय प्राइस से नीचे गिर गए। तो उस टाइम हमें बड़ा दुख हुआ कि उस टाइम अगर हम बेचते तो सर ऐसे वॉलेटिलिटी को कैसे राइड किया जा सकता है? ऐसे वॉलेटिलिटी को राइड करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कम समय में बाजार में या किसी भी शेयर का दाम का रुख क्या रहता है, बढ़ जाता है, गिर जाता है, ये गेस करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन किसी अच्छी कंपनी का शेयर जब आप लेते हैं तो एक खास पीरियड में और खासकर मुझे लगता है कि कुछ सालों में आप काफी भरोसा कर सकते हैं कि ये कंपनी और इस वजह से दाम बढ़ा होगा। और जो बड़ा दाम बढ़ता है 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना जब कोई दाम होता है तो वो इस तरह की खरीद बेच करने से आपको अक्सर, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आप किसी भी अच्छी कंपनी का जो पिछले 10 साल 15 साल में बहुत जिनका दाम बढ़ा है, जिसकी वजह से लोग बहुत सारे निवेशक अमीर हुए होंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि वो गिरते भी काफी है बीच में। अगर आप देखेंगे कि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, HDFC बैंक जो कि भारतीय निवेशकों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहा है, आज जो आप दाम देख रहे हैं कम से कम ये सालाना 20-25% का रिटर्न लोगों को मिल पाया है 25-30 साल में उसकी शुरुआत के बाद। इसके बावजूद भी 5 बार HDFC बैंक का शेयर आधा हो चुका है और अभी भी पिछले 2-3 साल से यहाँ पे कोई खास रिटर्न नहीं दिखता है। तो अच्छी कंपनी के शेयर भी कई बार गिरते हैं। अंतर केवल यह है कि जिन कंपनियों में दम नहीं होती है उनके जब शेयर के दाम गिरते हैं तो फिर दोबारा नहीं बढ़ते। Okay, we've got this email from N.R. Prasad from Bengaluru, and not from him, I beg your pardon, this question has come to us about the active mutual funds versus passive ETF. Would you explain the difference between the two? Yeah, as in the context of the first question, I was saying that, there are broadly 2 kinds of mutual funds. One which is a replica of the index. So there is absolutely no role of a fund manager. You give the money and the money gets distributed exactly the same ratio as the constituents of the index. Whereas when you entrust your money to an actively managed fund,
a flexi-cap fund, a multi-cap fund of a company. There's a designated fund manager. He decides what to buy. He decides what to sell. He decides how much should not be invested, whether it should be fully invested. So these are decisions which actually go into, so somebody is actively managing your money. Whereas passive is referred as replicating the index in the form of a fund. और हमारे अगले कॉलर हैं एनआर प्रसाद बेंगलुरु से। प्रसाद जी, आप सवाल पूछ सकते हैं। और आज तो आपके लिए बड़ा दिन है। बेंगलुरु मैसूरू जो एक्सप्रेसवे है उसका उद्घाटन हो चुका है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में एक और गति तेज आई है। अब आप जल्दी पहुंच सकते हैं। बहरहाल आप पूछ लीजिए म्यूचुअल फंड से संबंधित अपने सवाल। हाँ। Actually, what I want to ask you is, a few weeks back when I called, there were some suggestions made in today's global economy situation. I was advised to invest in foreign mutual funds, largely Korean and some of the European and American mutual funds. Can you name at least 2-3 so that I can invest in those? Yeah, there are quite a few, but my suggestion is that, even when investing abroad, I think it is a meaningful diversification. But at the same time, you should seriously consider investing in a fund which gives you a broad exposure, substantially a single fund, because it's very difficult for an investor, for an Indian investor, to keep an eye on the different segments of the market and try and make sense of it. Okay, Dhiren, after witnessing the withdrawal of funds in the last 3 months, gold exchange traded funds are attracting a lot of net flow, in fact, to the tune of 165 crore in February, mainly due to a slight correction in local yellow metal prices. What's your take on the gold ETFs? No, I have always believed that gold is not a great investment, not a great long-term investment. And if at all somebody is inclined or thinks that, and gold is a very meaningful thing, particularly at a time when there is a great uncertainty in the market, in the equity market or the debt market. And that is when gold really stands out. So as you can see, right now, if you look at, 10-year return of gold, it is not that handsome. But if you look at last 1 year, it has done well. It has done exceptionally well. That too, when compared to equity and debt. The real reason and people actually chase recent performance. If something has done very well in the recent past, investors tend to invest there. And that is what is clearly visible here. And this may not be a very wise thing to do. Okay. Sanjay from Mumbai is with us. Sanjay, a warm welcome to Market Mantra. Please go ahead and ask your question. Sir, my question is, which category of debt fund has most negative correlation with equity? In fact, equity and debt funds generally have a negative correlation. But if we keep aside the liquid or where you actually park your short-term money, I think in the medium term it tends to be inverse relationship. But in terms of if you are looking at disappointment, if you are looking at a stable return, then I haven't come across an Indian category, the dynamic bond fund, the flexi cap equivalent in the debt category. They don't turn out to be as stable. The only category which has proved to be fairly stable are the short-term funds. Okay, Dhiren, according to the data from the Association of Mutual Funds in India, it shows that inflows into sectoral and thematic funds have jumped 3.2 times from 903 crore to 3,856 crore in February. So which are these sectoral thematic funds where the investors are flocking to and primarily to seek value creation? These are primarily, this is not a very new phenomenon. In fact, every time a narrow segment of the market does well,
or there is a talk that, this is something which is completely out of favor. So what we have seen in recent times, chasing of recent better performing categories, and this is where the PSU fund or some of the thematic funds in certain categories are really stacking up. But this is generally a avoidable strategy, simply because things turn around when you least expect it. Okay. जी, आज हम मार्केट मंत्र में म्यूचुअल फंड्स पर बात कर रहे हैं अपने एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार के साथ। टेलीफोन लाइन का नंबर है 23314444, दिल्ली का नंबर 011 STD कोड के साथ आप डायल करें और सवाल पूछ सकते हैं। हमारे अगले कॉलर होंगे हरीश फरीदाबाद से। हरीश जी, अपना सवाल पूछें। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे बैंक बीज और निफ्टी बीज करके होता है और उसी तरह म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। जैसे बैंक बीज में ETF होता है और उसमें निफ्टी बीज ETF होता है, तो इसमें रिटर्न कौन सा बेस्ट देगा, म्यूचुअल फंड या ये बैंक बीज और ये निफ्टी बीज? दोनों ही इंडेक्स है आप? जी, दोनों इंडेक्स फंड है, लेकिन एक का जो डिजाइन है वो ETF है और दूसरा अगर इंडेक्स फंड है तो ये पूरी तरह से ये दोनों में रिटर्न आपको बिल्कुल बराबर सा ही मिलेगा अगर आप इसको मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में रखते हैं। केवल इसको खरीदने का तरीका अलग है। आप निफ्टी बीज आप खरीदते हैं बाजार से और दूसरा आप खरीदते हैं म्यूचुअल फंड से सीधे तौर पे। Dhiren, what could be the reason? I'm citing the data that has come from AMFI, and they're talking about debt schemes continue to see an exodus of funds, with the category registering over 11,800 crore of outflows. What could be the reason behind this, and what would be your advice to those who are invested in the debt schemes? The primary reason was, a lot of investors who invest in fixed income funds, they moved into categories anticipating interest rates to go down from here. But the indication that we have got from RBI in the recent monetary policy update is that, looks unlikely and things may not stabilize for us to expect interest rate cut. What happens is when interest rates go down, some of the medium-term, long-term bond funds, they go up substantially, very sharply. And anticipating that, opportunistic fixed income investor invested in those, but we saw a disappointment in the commentary because of which we see this exodus. जेस मेहता हैं हमारे साथ जुड़े हुए दिल्ली से। मेहता साहब नमस्कार, सवाल पूछ लें आप। नमस्कार सर। सर, मेरे पास एक्सेस टैक्स सेवर फंड है, तो ये कैसे परफॉर्म करेगा? मैं 5 साल से होल्ड कर रहा हूँ इसको, बट पिछले साल इसका कोई न्यूज आया था फंड मैनेजर का, इस फंड पे भी कोई इम्पैक्ट आया है क्या उसका? एक्सिस का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड बहुत अच्छा फंड रहा है। पिछले 1-1.5 साल से इसका प्रदर्शन थोड़ा कमजोर है, लेकिन इस फंड का उस जो सेबी का ऑर्डर आया और यहाँ पे कुछ फ्रंट रनिंग और इस तरह की घटनाएं हुई थी, उसका असर इस फंड पे खास नहीं हुआ है। लेकिन आज के दिन अगर किसी अच्छे टैक्स सेविंग फंड का चुनाव करना पड़े तो उसमें एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड नहीं आएगा। Now that the fixed deposits are getting good rate of interest, and if I were to ask you what should I choose between FD and the equity schemes, what would you recommend to me? It is not about mutual funds or equity schemes or fixed deposits. Your short-term money, medium-term money, or the part of money with which you don't want to take chances should be invested in either FDs or in a fixed income fund. And only the long-term money, and if you are accumulating it, if you are actually continually still saving and investing, that should go into equity. The money which you are unlikely to need for 5 years and more should be invested into equity, and fixed deposit is a different thing altogether. You don't want any downside risk, or you want to provide greater stability to your overall portfolio. That's why you should have it. So it should be decided where to invest and how much to invest, entirely based on your own circumstances. Okay. Puneet Sharma from Gurugram is with us. Puneet, a warm welcome. Please go ahead and ask your query. नमस्कार, मेरी इंक्वायरी है कि मैं
दो फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। दोनों ही HDFC के फंड है और जिसमें मैं वीकली SIP करता हूँ, जिसमें है HDFC स्मॉल कैप फंड और HDFC फोकस फंड। ये मैं 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना शुरू करा है, जो कि अक्टूबर से स्टार्ट करा है। क्या ये मेरा डिसीजन ठीक है? और 2 साल में आपको निकाल देना है? अभी मैंने फिलहाल 2 साल के लिए अभी इन्वेस्टमेंट शुरू करा है इससे। आगे मतलब मैं उसका क्या उसका रिजल्ट रहता है, उसके बाद ही मैं इसको डिसीजन लूंगा। नहीं, मुझे लगता है ये दोनों अच्छे फंड रहे हैं, लेकिन इनके लिए अपने कैटेगरी की तुलना में स्मॉल कैप फंड के लिए कुछ और बिल्ट है, क्योंकि ये फंड बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन फिलहाल ये फंड अच्छा कर रहे हैं और आप 2 साल तक निवेश कीजिए। लेकिन जब भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो 5-7 साल का नजरिया रखना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि ये फंड फिलहाल अभी अच्छा कर रहे हैं। धीरेन्द्र, हमारे पास एक कॉलर हैं अवनीश, इनका एक सवाल आया है और सवाल ये है, पूछ रहे हैं कि फ्रैंकलिन इंडिया फीडर और फ्रैंकलिन US अपॉर्चुनिटीज फंड है, इसमें इन्होंने निवेश कर रखा है और कुछ साल पहले तक इसमें अच्छी उनको रिटर्न मिला, लेकिन अब ये शायद उतना अच्छा नहीं कर रहा है, तो इसमें बने रहें या इसमें लॉस बुक करके निकल लें? नहीं, मुझे लगता है कि अधिकतर फंड जो कि US में इन्वेस्ट करते थे उनका प्रदर्शन कमजोर रहा है, अच्छा नहीं रहा है पिछले 1 साल में। और यहाँ पर मेरी सलाह होगी कि अगर ये आपके पूरे पैसे का अगर 20% से ज्यादा नहीं है तो इसमें बल्कि बने ही नहीं रहना चाहिए, इसमें और पैसा लगाना भी चाहिए। और अगर इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगा हुआ है तो उसको तब अपना एलोकेशन कम कर दीजिए। लेकिन ये फंड जो फ्रैंकलिन इंडिया US अपॉर्चुनिटी फंड है, ये एक बेहतरीन फंड है, एक्टिवली मैनेज फंड है, आपको पूरे बाजार का एक बहुत ही बैलेंस तरीके का आपको एक्सपोजर देता है। और एक अंतर, अभी भले ही हर बाजार में उतार चढ़ाव देखा जाता है, लेकिन जिस तरह के टेक्नोलॉजी का हम इनोवेशन देखते हैं, जिस तरह का स्केल देखते हैं, जिस तरह से वहाँ की कंपनियां जिस स्केल की हो पाती हैं, और वो और US डोमिसाइल फंड होने के बावजूद भी चूंकि उन कंपनियों का बाजार पूरे दुनिया में विस्तृत होता है, तो मेरे नजरिए से US डोमिसाइल फंड मुझे ट्रूली ग्लोबल फंड दिखते हैं। ये एक अच्छा फंड है, इसमें जरूर पैसा लगाते रखना चाहिए। Amar Reddy joins us from Thane. A warm welcome, Amar. Please go ahead and ask your question. The team, I just have a very short question. It is regarding the redemption which takes place from the mutual funds. Like when you have the debt funds, that is T+1. You would give a redemption before 3 o'clock, and the next day the funds are available in your account. Whereas for the other funds, it is a T+3. Why so different? Because the NAV given is for that same day only. But when you have a debt fund, it comes into your account the next day. Whereas the other funds, it takes T+3. Why such a difference, and what? Because if the NAV is given for the same day, then why the difference? Yeah, because when it is based on the T+3 is primarily keeping a day margin, because most stock transaction gets settled on a daily, nowadays on a daily basis, but earlier they used to be on a T+2 basis. So very soon I am hoping that mutual funds will also be settled, or the realized money can actually come to you a day earlier. But the realization from equity mutual funds is a function of what is the settlement cycle of the equity market. Okay, Dhirendra, just about 15 days left for the closing. What's your advice to those who are now rushing for tax saving schemes, or something to do with how to save tax? No, one is that if you have room to invest, then by all means don't let it go. Don't give it a pass simply because even if you have to borrow to invest money in a tax saving fund, it is worthwhile, because money saved by way of taxes is money earned. And this is perhaps, from next year onward, next year you will have the choice of choosing the new tax regime or the old tax regime. But so far, tax saving funds are the best alternative. And ideally one should be investing in tax saving funds through the year. But if you haven't done it, invest now.
मनोज बंसल हैं हमारे साथ हरियाणा से। मनोज जी। हाँ जी, हाँ जी जी स्वागत, आपका सवाल पूछ लें। हाँ जी, मैंने यूटीआई फोकस्ड फंड में पैसे लगाए थे जी, 1 लाख रुपए, करीब 17-18 महीने हो गए, उसमें कुछ भी रिटर्न नहीं आ रही है। जवाब मोबाइल पे ही दे दीजिए जी। यूटीआई का फोकस फंड बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो आपका टाइम फ्रेम है, इसमें पूरा बाजार ही कोई खास उसका यहाँ प्रदर्शन नहीं रहा है, और मुझे लगता है यहाँ पे आपको थोड़ा और धैर्य रखना चाहिए। ओके जी, टैक्स सेविंग पे हम धीरेन्द्र बात कर रहे थे। एक और हमारे श्रोता हैं, इनका ये सवाल है कि टैक्स सेविंग में 3 साल के लिए इनका लॉक इन, अगर किसी का पैसा हो जा रहा है, जो होता ही है, और बीच में अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो वो फिर टैक्स बेनिफिट तो उस साल का वो ले नहीं पाएगा। तो ऐसे में भी क्या लॉक इन 3 साल तक रहेगा, या कोई प्रोविजंस हैं कि बीच में उनके नॉमिनी जो हैं उसको निकाल सके? नहीं, टैक्स सेविंग फंड में ये बहुत क्लियर है कि अगर किसी के डिमाइस की स्थिति में वो पैसा रियलाइजेबल है, और अगर आपने टैक्स की छूट ली भी है, उसके बावजूद भी वो पैसा आप उनके नॉमिनीज रियलाइज कर पाते हैं। जी, एक और कॉलर हैं, दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। दिलीप जी, आपका स्वागत, सवाल पूछ लें। हाँ, मेरा नाम है मुंबई। जी दिलीप, सवाल पूछें। I think we've lost touch with him, Dhiren. Is it okay for investors to look at funds with a shorter duration, Dhiren? No, that is, as I was telling you in the context of your earlier question of the fixed deposit, one should decide how much to invest in fixed income and how much to invest in for a long term. That's the first question. The money for the long term should be invested in equity. The money to be invested in equity should be spread over a period of time. You should try and average it. When it comes to investing for the short run or putting money in fixed income to the extent that it will provide you great stability, if you want great stability, maybe 75% of your money should be in fixed income. If you can actually withstand some market, you have gotten used to the market, maybe 50%, maybe 25%. That money should be invested in short-term funds. And any money which you are likely to need in a defined time frame, 3 months, 6 months, choose the appropriate fixed income category, because there are funds particularly suited for a defined time period. Okay. We have Ashok also with us now. Ashok, a warm welcome. Please ask your question. Now we've lost touch with him. We'll just give you overall view of the weekly stocks. The domestic equity benchmarks in this business week ended yesterday declined more than 1%. The BSE Sensex closed below 59,150 points and the NSE Nifty settled below 17,450 level. Investors remain cautious ahead of the release of jobs report and probable interest rate hikes by the US Fed. During the week, the Sensex declined 674 points or 1.13% to finish at 59,135. The Nifty 50 index lost 181 points or 1.03% to end at 17,413. In the broader markets at BSE, mid-cap index added 0.09% and the small-cap index rose 0.38%, outperforming the Sensex. और आज वक्त खत्म हो रहा है। हालांकि हमारे साथ दिल्ली से एक कॉलर जुड़े हुए हैं, रविंद्र, लेकिन समय की कमी अब है। आप नेक्स्ट टाइम आप अपना सवाल पूछ लें। सारे श्रोता जिन्होंने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और धीरेन्द्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for being with us, Dhirendra. And before we close, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi dedicates to the nation Bengaluru-Mysuru Expressway in Karnataka. And foreign investors pump in more than 6,300 crore rupees in the Indian capital markets this month so far. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Namaskar. Market Mantra.